If there's one thing that I will never regret in my life, it would be this Japan trip. Yes, you guys, I'm in Japan, and in my last vlog, we visited Pokemon Cafe and witnessed 17 perform live. And honestly, everything felt just so surreal. I still feel it was all a beautiful dream. Today, my friend and I are going to dress up in Japanese traditional clothing, go shopping, have fun, and make memories that will last a lifetime. So let's start with shopping in Tokyo and showing you my outfit. I'm going to Harajuku right now. We are going to shop. Today is shopping day, official shopping day. घर के लिए सामान लेना है, मतलब लोगों के लिए सामान लेना है, and I will buy a few things for myself. Obviously I will, and I'm trying to not overspend. I have a budget and उस budget में सब कुछ करना है. So yeah, I decided to start the vlog थोड़ा different क्योंकि I sit there every single day and I thought you guys will get bored. So yeah, this is me going out. My friend is also here, and yeah. OOTD, I really like this top. I got this from a Zara store here. It's so pretty. See you in a bit. This is a subway station by the way. And ये main subway station है. It's one of the main ones. And यहाँ पे इतनी भीड़ होती है हमेशा. So हम यहाँ से जाएंगे Shinjuku से जाएंगे Harajuku. I put a different battery today, so hopefully this will not get exhausted too quickly, because the other one it was only working for like 2 hours most, which will not do because I have a lot to vlog. Guys, I'm at Cosme. Cosme is basically Japan's Sephora. So they have everything, but यहाँ पे affordable brands भी है. So more like Japan's Ulta. And I got a bunch of stuff. ज़्यादा कुछ नहीं लिया अभी तक. अभी भी I'm exploring. There's so much भीड़ here, and I'm filming a full short video. So you will get more information there if you want more info. So वो ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे vlog करना थोड़ा मुश्किल है. बहुत लोग हैं, and I don't want anyone to like report me कि यहाँ पे vlog कर रही है. Then because these people are very strict and they will kick me out, so it's easier to film on phone than like whip out my vlogging camera like this. Okay. I already got serums. I got this by the way. Oh, they have this thing that I have. Oh my god, itna bada Vaseline. Wow, I need this. But how will I carry all of this? Just got done at Cosme. I got a bunch of stuff. ये रहा बैग. मैंने कुछ ऐसा मेकअप नहीं लिया as such, but I got some like local brand का जो स्किन केयर एंड हेयर केयर है, वो मैंने कुछ उठाया है. वाओ, वो मैंने कुछ खरीदा है. Let me know if you guys want a haul. I think I'll just do one video where I just show you guys everything that I got from Japan. That'll be the easiest. And I also got like a few gifts, so that was good. They have a lot of variety. बहुत कुछ है. I think 3 floors है, so there was a lot. I got tired. फिर मैंने कहा बस जो ले लिया वो ले लिया, and बाकी फिर निकलो. इतनी भीड़ भी थी वहाँ पे, and अभी यहाँ पे street पे भी भीड़ है. We are going to have lunch, or we are going to the Line store? We're going to have lunch first. Yeah, we are going to have lunch, and we are having tempura something. I don't know. Guys, are we sure you want to go here? Let's go. Let's cut through and see the shop. Yeah. I'm going to the shoe shop, you guys. Look at these shoes. Oh my god. These will make me so tall. Oh, they have it in black. These are basically dupes of Naked Wolf, the ones that I have. And these are pretty cheap. कितने सुंदर है ये. I really like this, but like I don't want all of this. Maybe this is better. These are the prices of the boots. I really like these. They're so cute. थोड़ी सी heel भी है. These are so comfy. With your current fit, they already look good. They are so comfortable. Are we kidding? Why are these so comfortable? Wow, it's like walking on clouds. This is insane. Why is this so comfortable?
Do they look pretty? What do you guys think? नहीं ले रही मैं इनको क्योंकि थोड़े से लूज हैं and these are the smallest size. This is like really good for travel. I'm confused. I don't know which one to get. This is more for like every day and this will match every outfit. This is more like, okay, you want to like look like Barbie. Both are cute though. Should I buy this? This reminds me of Pied Piper. What you wear it with? They have a jumbo one too, but ये तो मैं carry ही नहीं कर पाऊँगी. So he basically said that I can buy this one as an accessory too, but yeah, इसमें oh god, this is so small. Oh, they have a baby pink one also. Wow, these colors are just, look at the nude one. कितना सुंदर है ये. So these straps are extra 7,000 का, but I don't want a longer strap because मैं इसको ऐसे ही पकड़ूंगी like handle की तरह. Thank you so much. You too. Thank you. So I bought a tote bag from Marc Jacobs. ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था and I actually needed a tote bag for traveling and I have so much stuff. So the tote bag that I have literally fits nothing and I was complaining about it while coming here too. So मैं इसमें सब कुछ डाल के जाऊँगी. So I'm glad I got it and I got it at a really good price. I got it for like about 38,000 and इसमें मुझे tax free भी मिला है काफ़ी. So that is good. And now we are going to have some lunch. I'm so hungry now. अब मेरी फ्रेंड को भी भूख लग गई है. आई थिंक इसके बाद हम शिंजुकू ही जाएंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है एंड कुछ खरीदने का मन नहीं कर रहा. इट्स लाइक फास्ट फैशन बट इट्स शीएन टाइप फास्ट फैशन. सो वो मुझे वैसे भी इतना पसंद नहीं है. शिंजुकू हैज़ बेटर शॉप्स. सो आई थिंक आई एम गोना गो टू शिंजुकू नाउ एंड ओके आई एम क्रॉसिंग द रोड. ओके. Hello friends, welcome to day 5 or 6. I don't even remember. But आज सुबह सुबह मैं तैयार हो गई हूँ. It is 8:30. आज हम जा रहे हैं आसाकुसा एंड वहाँ पे हमने एक अपॉइंटमेंट बुक की है. वी आर गोइंग टू गेट ड्रेस्ड एज जापानीज गर्ल्स. आई एम गोइंग टू वेयर अ किमोनो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. मैंने कभी भी किमोनो नहीं पहना ऑब्वियसली एंड आई एम गोइंग टू डू दैट एंटायर एक्सपीरियंस. एंड वहाँ पे आसपास श्राइन्स एंड टेम्पल्स है सो वी कैन बेसिकली रेंट इट फॉर द एंटायर डे एंड फिर वहाँ पे हम घूम सकते हैं. वहाँ पे स्ट्रीट फूड है एंड
स्ट्रीट शॉपिंग टाइप की चीज़ें हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन डे. आई थिंक यहाँ से हमें 45 मिनट्स लगेंगे एंड वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है दैट इफ़ यू आर लेट मोर देन 10 मिनट्स देन वो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देंगे एंड दे आर गोना चार्ज यू फुल अमाउंट. सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेट. इसलिए आज मैं टाइम से रेडी हो गई एंड आई वॉज जस्ट लाइक मैं अपनी साइड से तो बिल्कुल भी कोई डिले नहीं करना चाहती. बाकी अगर सबवे वगैरह में थोड़ा डिले हो जाता है देन दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स. बट मैं अपनी तरफ से तैयार हो गई. येस्टरडे वी वेंट टू हाराजुकू राइट एंड ऑनेस्टली हाराजुकू में कुछ था नहीं है सच. वहाँ पे जो स्ट्रीट शॉपिंग है इट वॉज रियली ऑफ लो क्वालिटी एंड बाकी वहाँ पे सब कुछ बहुत महंगा है लाइक लग्जरी शॉपिंग. सो वहाँ पे हम 1-2 स्टोर्स में गए थे एंड मुझे वहाँ पे चीज़ों का क्वालिटी अच्छा नहीं लगा. आई थिंक इट्स मोर फॉर हाई स्कूल गर्ल्स एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स देन इट इज़ फॉर समवन लाइक मी. अब मुझे थोड़ी बेटर क्वालिटी के कपड़े चाहिए होते हैं बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट कि 2 वॉश के बाद वो खराब हो जाए देन देयर इज नो पॉइंट. सो आई डिड नॉट शॉप एनीथिंग फ्रॉम हाराजुकू. आई जस्ट गॉट द बैग. यू गाइज ऑलरेडी सॉ द बैग. मुझे रात को जाके SD कार्ड भी लेना पड़ा. ओके सो SD कार्ड लेने गए एंड देन मैं अपने मॉम का क्रेडिट कार्ड लेके आई हूँ यहाँ पे बिकॉज आई डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड एंड दे टोल्ड मी आई कांट पे विद दैट बिकॉज मेरा सिग्नेचर नहीं है उस पर एंड आई हैव बीन यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड एवरीवेयर. तो कहीं पे तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं. कल SD कार्ड खरीदने के लिए प्रॉब्लम हुई एंड मैंने उसी सेम बिल्डिंग से अपना सिम कार्ड भी खरीदा था मम्मी के क्रेडिट कार्ड से. सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्या इशू है. थैंकफुली आई हैड माई फ्रेंड तो उसने पे कर दिया तब वरना मेरे पास SD कार्ड ही नहीं होता एंड दिस टाइम I got 128 GB का SD कार्ड. सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नाउ आई कैन फिल्म एज मच एज आई वांट एंड मैं जितनी बकर करना चाहती हूँ मैं सब कर सकती हूँ. यहाँ पे कपड़े महंगे हैं, जूते भी थोड़े महंगे हैं बट डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली क्या लेते हो. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना H&M ज़ारा प्राइसेस के है बट लाइक थोड़ा हायर एंड में आपका सिर्फ 599 699 का जो मिलेगा वो शीन क्वालिटी का होगा. बट जो आपको 1.5 2 2.5 3 हज़ार का मिलेगा वो आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा लाइक बेटर क्वालिटी का मिलेगा. एंड मुझे लगा कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि ऐसे कपड़े तो हमारे को इंडिया में मिल जाते हैं तो मुझे यहाँ से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड बाकी यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब बहुत सस्ती है लाइक 500 येन 1000 येन 1500 येन. सो ये सारी चीज़ें काफ़ी सस्ती है तो आई गो फॉर थिंग्स लाइक दैट एंड दोज आर थिंग्स दैट आई नो आई कैन नॉट फाइंड इन इंडिया एट ऑल क्योंकि यहाँ पे एनिमे कल्चर बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पे ना फैन कल्चर बहुत ज़्यादा है. हर चीज़ के फैंस है. देयर इज लाइक अ फैंडम फॉर एवरीथिंग एंड यू विल गेट मर्च और यू विल गेट सम टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर एवरीथिंग एंड you will find it everywhere here. I have been not talking for 14 minutes. I will see you guys in Asakusa. I'm wearing this black dress today and I got this from Urbanic पर ये मैंने बहुत टाइम पहले खरीदी थी so I don't know if I can find a link. and इसके नीचे मैंने शॉर्ट्स पहने हैं because यहाँ पे बहुत हवा चलती है so बाई चांस से उड़ गया. I don't want a moment here. and these are my favorite earrings. मुझे बहुत लोग पूछते हैं इन earrings के बारे में. ये मैंने वो कोरियन कार्निवल के किसी स्टॉल से खरीदा था so इसका ऑनलाइन लिंक तो मेरे पास नहीं है. I'm really sorry and I'm just wearing my sneakers and this is the bag that I'm carrying. Here is Chimmy. This is the OOTD. हेलो गाइस, आई एम इन असाकुसा. वी फाइनली रीच्ड. हमारी ट्रेन 2 बार रुकी एंड एक ट्रेन चल ही नहीं रही थी सो हम बहुत लेट हो गए हैं. बट आसा कॉल्ड them already and she informed them so I don't think it should be an issue and we are I think like 15 minutes late. इतना चलता है वैसे पर यहाँ पे नहीं चलता. यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है. वी हैव टू शो लेट स्लिप जो यहाँ पे ट्रेन वाले देते हैं अगर ट्रेन में कोई इशू हो जाता है सो दैट यू डोंट गेट स्कोल्डेड एट योर वर्क प्लेस एंड स्टफ. सो वी हैव दैट टू एंड आई होप इट गोज वेल. ओके सो आवर किमोनो अपॉइंटमेंट इज postponed because we were a little late and someone else came so they are getting theirs done but we are on for 12:30 PM which is not bad. We have like almost 2 hours. तो 2 hours हम चिल कर रहे हैं. यहाँ पे हम घूम रहे हैं. यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है so मार्केट में घूम रहे हैं पर बहुत ज़्यादा भीड़ है. feel like I'm in सरोजनी नगर shopping and you guys know how hectic that is. So cute. This is Sakura, right? Guys, this is made in India. I think these
bags are 1,100 yen each. We are at 7-Eleven because I want coffee. I feel so sleepy. मैंने सुबह थोड़ी सी कॉफ़ी पी थी. तो अभी हम 7-Eleven में चिल कर रहे हैं. बाहर इतनी भीड़ है यार, मैं क्या बताऊँ. मैं कैमरा निकाल रही हूँ एंड मैं व्लॉग नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे आर्म्स डिस्टेंस में लोग हैं. सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट. 7-Eleven always reminds me of Thailand because in Thailand you walk and you have like 5 7-Elevens everywhere. So I love Tokyo. I love Tokyo. These are little girls in kimonos. ये क्या है? Oh, cosmetic bag. They have a wallet here too. Nice. I'm at a local drugstore now and मुझे ना एक sunscreen लेना था. My friend has the same sunscreen and I liked it so much, so I got this. This is the one. It's called Biore. So this is the one that I got and it is pretty cheap for like so much quantity. Got this for mom. She needed a moisturizer. They have makeup. They have makeup everywhere here. This is like a hair wax for your flyaways. ये बहुत अच्छा है, मेरी फ्रेंड भी यूज़ करती है. हम अभी जल्दी आ गए so that अभी अपॉइंटमेंट हमारा पोस्टपोन ना हो. I have my receipt. I'm just waiting. फिर 12:30 we're gonna start getting ready. I am so excited. पहले हम किमोनो चूज़ करेंगे and पूरा लुक चूज़ करेंगे and उसके बाद we will get ready. And I am paying 8,000 yen for this. They are going to do my hair. We are going to rent the kimono and slippers and socks. Socks we have bought. So ये सब मिला के it's 8,000 yen, which is a little expensive, but it's a very touristy thing to do. So it's not like that much either. We are here. These are all the kimonos. पर ये मुझे बहुत लंबे लग रहे हैं यार. ये तो मुझे फिट ही नहीं आएगा. इसमें तो मैं 2 आ जाऊँगी. Oh, they have such beautiful patterns. Kimono insurance. I mean, like, you have to pay if you have dirt on it and stuff like that. Okay. So I can choose any of these kimonos. I think I'm gonna go for this one. This has a like really nice shiny rose gold material. How's this? They look cute. Right? Because I think that this will look nice in pictures, right? So my friend and the people who work here both say that black looks the best and I should go for that instead. So I'm gonna go for the black one. You know, it was meant to be. This is called obi and this is like a belt around your kimono. So I'm going for white with black lace and this will be tied around my waist like this. Yeah. Okay, my friend has to choose her obi now. This is her kimono. But does blue make sense or what? This one? A darker kind of blue, maybe? Ah, wow. I think something in green would be look nice, right? Yeah, green would be nice. I think I'm gonna go in with this bag क्योंकि मेरे किमोनो के साथ मैच करेगा. They have like so many bags to choose from. Oh, they have more bags to choose from. This is also pretty. But I think this lace goes well with the rest of the stuff that I got. Use your decorations. They have a hair menu too. Oh, this is for me. I want to keep it open, like probably like this. I want this, but I want it with a bow. That I works. think that will look cute. And this is for long hair, right? Yeah. Do you know what you want to get? I think so. Which one? Either this one or this one. Oh, this looks pretty. Oh, this looks pretty too. You have long hair, so you can get that done. I think because I have like my bangs Yeah. and like this part okurige, I can go for this one. This will look nice. Are you ready for the reveal, you guys? Ta-da! Oh my goodness, I don't even recognize myself. This is so different. And they didn't let me film inside, so I couldn't show you guys the entire process because people are changing there. But this is the look. Look at my hair, you guys. It has a bow. I'm gonna take pictures and show you guys. And this is my full look. This is my friend. She looks so pretty. Oh, this is really traditional. What is this called? Hakama. Hakama. Like this is a clothing for usually female students. Ah, okay. Show me your bag. Girls. Ah, so pretty. I think this really suits you. Guys, we are taking pictures and we came upstairs and they have an entire setup here. Look. You can sit here and यहाँ पे सारा ये setup है.
Yeah, this standing is okay. Oh, this is so pretty. Smile. Do something. Do something. Look outside. Oh yes. Your jawline is so sharp. And we are going to the shrine now. I feel so pretty. इन्होंने मेरे बाल इतने अच्छे से किए, even though my hair was so oily. They did it so nicely. I took a lot of pictures, so I'm gonna post them and you guys tell me how I look. But yeah, this is so cute. I love it. I love this part. I don't know what is this called? OB, yeah. I love OB. Honestly, it's easy to walk. I thought कि मैं चल नहीं पाऊँगी, but I can walk pretty easily in this. They also gave us slippers. Okay, so this is some fortune telling thing जो यहाँ पे आपको निकालना है, and this is for 100 yen. So I'm gonna do that. You put your 100 yen here, Okay. and then this will give you a number, Okay. and you can take your fortune in the number. Okay. What is your number? 43. Okay. For lost things, you'll find it. Okay. You'll find some lost things. This is the person you're waiting for. It might be a bit late, but they will come. Okay. Mostly it's like that. Vanu will come. And it's building a new house or moving out. Okay. It's like half version. Okay. For traveling, make sure you have someone with you. It'll be safer. Oh my god. And then marriage or just relationships in general, it'll go just fine. Oh my god. This is such bad fortune. What the hell? It's fine on small version. Oh my god. Just walking around and you find Tanjiro. Wow. My hair is extra Tanjiro today because it's a little shade. curled and because it's red. We're just walking around. We are literally not doing anything. I had to buy a knife for my sister, so I got that. क्योंकि यहाँ पे Japanese steel की बहुत अच्छी knife मिलती है. So she had asked me to get one for her. So वही मैंने खरीद लिया. And अभी हम बस literally we are just walking in the alleys और कुछ करने को तो है नहीं. हम ऐसे chill कर रहे हैं. There's some tea. Asa really likes tea. This is such a cute set. Bon appetit. Guys, look, there's Doraemon merch. So cute. And they have bags. Oh, these are laundry pots. Oh, You put your, laundry. like And delicate stuff there. this is a keychain. You can use it for your bag and stuff. Change of plans, you guys. So I was starving and Asa has an early class tomorrow, so we decided to have dinner and then I'm going to catch a cab यहाँ से अपने होटल के लिए because I am in her locality and अभी हम जा रहे हैं इस शॉप में, this shop right here. So this has local Japanese snacks and मुझे निधि ने बोला था कि definitely लेके आना and हम उसका एक taste test करेंगे. So that's what I'm going to do. It's a convenience store. It'll also still be cheap for 200 yen, but like it's helpful. Why should I give 100 yen more? Let's take this. Are these good? No, wait. These ones are better. Give me the ones that you like. What are these? These ones are. Oh, they're like nuts. Savory, spicy nuts. Oh, these look nice. These are nice. There's chocolate one. Oh, I got them and I really like them. I'm gonna get like two of They're these. like this is. This is like a limited edition for the Okay. season, and it's like butter and milk chocolate. The butter is different. Okay, let's keep this. I'm a chocolate person. I really like chocolate. What is Milka? It's a Swiss chocolate. They're really sweet. Really sweet? Yeah, they're Should I get? But this this has white. Japanese. But this has white chocolate, right? What is this? One is caramel and the original Kit Kat. They have an original Kit Kat here somewhere. No, I should get this actually. They have a green tea Kit Kat, matcha Kit Kat. Should I get matcha Kit Kat? But I don't think. Yeah, I should get matcha Kit Kat.
This is usually the more popular one. Like matcha Kit Kat and the normal Kit Kat and the dark Kit Kat. What is? Oh, they have a dark chocolate. Yeah, dark Kit Kat. Put that too. Oh my god, I'm gonna open this tonight only. That's on them when I was a kid. Let's get them because you like them. Yeah, I want that. Yeah. It's sweet savory, so if you like any of those flavors. What are these? Which one? And these are chips. Oh. This is shrimp crackers, Pizza? pizza cheese, potato. This is spicy chips. They're not that spicy, but they're good. Okay, I'm taking way too much and I don't know how all of this will fit, but we'll make it work. Guys, this supermarket worships Jungkook. Look at that. They have his pictures and rest of the BTS are here. There used to be more. The way people Wow. go in. And the way they chose like some of his best pictures, like you know they are a fan. So we have Korean coffee and BTS is playing in the background. Amazing. This is mocha. This is just normal coffee mix. This is what Japanese apartment complexes look like. I would love to live here. This is such a good neighborhood. This would be a very rich neighborhood in India. Like just the vibes. We are going to have gyoza. Finally, I'm so hungry. खाना मिलेगा अब. आई एम बैक इन माई होटल एंड मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैंने आप लोगों को अपना होटल रूम दिखाया ही नहीं. सो आई एम गोइंग टू शो इट टू यू राइट नाउ. ओके, सो दिस इज़ द मेन गेट. यहाँ से यू एंटर एंड इसके लेफ़्ट साइड में देर इज़ दिस वार्डरोब जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो. मैंने अभी अपना सामान रखा हुआ है. दिस इज़ माई लगेज एंड फिर ये छोटी सी जगह है एंड देन ये रहा बाथरूम. द बाथरूम इज़ प्रिटी डिसेंट. इनके टॉयलेट्स बड़े फैंसी होते हैं. सो दे हैव लाइक बटन्स एंड स्टफ. ये सारा सामान मेरा है. देर इज़ अ ह्यूज मिरर एंड देन देर इज़ दिस टब. एंड इनका ये जो शैम्पू कंडीशनर एंड बॉडी वॉश है, दिस इज़ ऑल्सो प्रिटी ग्रेट. आई हैव ओनली यूज द बॉडी वॉश बट इट इज़ प्रिटी गुड. And this is the washroom. It has very good lighting as well. Then this is the table. This is a mess क्योंकि यहाँ पे मेरा सारा सामान है. यहाँ पे और कहीं रखने की जगह नहीं थी. सो मेरे जो डे टू डे बेसिस वाली चीज़ें हैं ना, जैसे बॉडी केयर, मेकअप, लॉन्जरे एंड बाकी सब मैंने यहीं पे रख दिया. उसमें मेडिसिन वगैरह है. एंड ये मैंने कुछ चीज़ें खरीदी है. सो दीज आर ऑल द बैग्स जो मुझे फिट करनी है. एंड देन यू हैव अ टीवी हियर. यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ डेली. देन दिस इज़ माई बैग एंड स्टफ. एंड ये मैं आज कुछ चीज़ें लेके आई हूँ. पीछे मेरी ड्रेस है, वो मेरा बैग है. एंड देन दिस इज़ द bed. This is a pretty decent size bed. My friend and I slept here on Saturday after the concert and both of us slept comfortably. This bed is pretty good and yeah, that is pretty much the room. Here you go. Oh, यहाँ पे भी एक मिरर है. मैं यहीं पे देख के अपना सारा मेकअप करती हूँ डेली. एंड देन दिस इज़ अ चेयर दैट दे हैव प्रोवाइडेड एंड दिस इज़ माई रूम. आई हैव बिन स्टेइंग हियर फॉर द पास्ट 5-6 days. कांट बिलीव इट. मेरा होटल लोकेशन बहुत अच्छा है एंड ये शिंजुकू के बिल्कुल मिडल में है. एंड आपको ना सब कुछ आसपास मिलेगा यहाँ पे. मतलब कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है. सबवे स्टेशन 5 मिनट दूर है. स्टारबक्स है सामने, खाने की चीज़ें हैं. मेन मार्केट यहाँ पे बहुत पास है. सो ये बहुत अच्छा लोकेशन है. मेरी फ्रेंड ने ही मुझे ये लोकेशन सजेस्ट किया था और ये होटल सजेस्ट किया था. दैट इज़ वाई आई गॉट दिस एंड आई पेड अराउंड 1,22,000 for 7 days. 7 nights actually, 7 nights, and that is actually pretty decent for this area and this hotel because the hotel is really good. ये relatively big room है. इससे बहुत छोटे rooms होते हैं टोक्यो में. मतलब हिलने की जगह नहीं होती है. So this is a pretty decent sized room for one person and for 7 nights this hotel has been really good, especially location wise. क्योंकि location अगर आपका अच्छा है तो मतलब आपको conveyance पे ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है and आपका time भी बचता है. So keep that in mind if you are coming here and जब भी आप कुछ book करो, I would say pick a good location and a good hotel. Hello guys, good morning. Today is the last day in Tokyo. I'm leaving tomorrow morning.
but we still have one day and I'm going to make the most of today. So we are going to Team Labs Museum and this is like one of the must do things in Tokyo if you come. ये Osaka में भी है, so this is like quite popular and I've seen a lot of people do this, not just foreigners and travelers but also like local people. They go here quite a lot because it's very beautiful. Okay, Team Lab Planets is a museum where you walk through water, a garden where you become one with the flowers. It comprises 4 large-scale artwork spaces and 2 gardens created by Art Collective Team Lab. ये इनका वेबसाइट में you guys can see थोड़ा बहुत यहाँ पे. You have to book this पहले से, आपको जाके ही टिकट्स नहीं मिलेंगे. सो इनके वेबसाइट में आप बुक कर सकते हो एंड देन यू कैन बुक द स्लॉट कि आपको कितने से कितने बजे तक जाना है. पूरे दिन का स्लॉट होता है. सो मैंने 12:30 to 1 का लिया है. सो आई डोंट थिंक कोई ऐसे टाइमिंग होता है बट आई थिंक 12:30 to 1 इज़ द bracket where we can go inside and then you can spend as much time as you want inside the museum. बनी मन ऐसे मैं सोच रही हूँ लास्ट डे है बट अब क्या कर सकते हैं. लास्ट डे है तो लास्ट डे है. I just have to get over it. Okay, I'll show you guys my outfit now. This is my outfit. I got this from Little Box India. नीचे काफ़ी लंबा था बट मैंने इसको अपने स्कॉट्स में टक कर लिया. I think this is a cute outfit and then I'm just wearing my white sneakers क्योंकि मुझे comfortable जूते चाहिए. And yeah, this is my outfit of the day. This is the Kamyocho station. This is what's recommended कि यहाँ पे उतरो एंड उसके बाद स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही है एंड एग्जिट करते ही आपको मिल जाएगा. यहाँ पे सब जगह साइंस है सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड. Should we just go inside? I think so. It's dark in here. Mom, I'm scared. Okay. Oh my god. Oh, what? And they scream. You guys, I'm in a camera store in Shibuya because my dumbass forgot to charge my camera battery. Like I don't know how I forgot to do that because I do it every single night. Somehow I forgot. So अब मैं एक camera store में आई हूँ to buy a power bank. Oh, they have a lot of them. So let me see which one should I get. They're not that expensive. So I'm getting a power bank for my phone so that I can vlog with my phone. I don't even know anything about these. I'm getting this one. This says for iPhone. So I'm going back to my hotel क्योंकि मुझे केबल लेना है and it is raining and ऐसी हवा चल रही है. Look at my hair. Oh my god. You guys, what the fuck? It's raining so much right now and हमें बाहर जाना था. ये क्या लक चल रहा है यार. मेरा लास्ट डे है. It says it's gonna rain the entire night. क्या चल रहा है यार ये. हमें जाना है कोरिया टाउन बिकॉज हमने सोचा कि हम थोड़ा सा वहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचेंगे, घूमेंगे. एंड अब इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि घूम तो हम सकते ही नहीं है. अभी हम सोच रहे थे सबवे तक चलते हैं, कैफ़े में चिल करेंगे एंड आई विल हैव अ माचा ड्रिंक. वो भी नहीं कर सकते अभी क्योंकि इतनी बारिश हो रही है कि हम नीचे नहीं जा सकते. सो आई एम जस्ट एट माई होटल रूम. मेरे लास्ट डे पे ये सब होना था. मुझे इतना गुस्सा आ रहा है. लाइक लास्ट डे पे क्यों.
कभी और हो जाता, कल हो जाता यार, मैं तो कल जा रही हूँ, बट लास्ट डे पे ये हो रहा है एंड आई ओनली हैव प्रेशियस आवर्स दैट आई एम वेस्टिंग, सो आई एम गेटिंग मैड. बाय द वे, my charger is working really well, power bank is working well so far, and I'm happy with it. I hope कि ऐसे ये चलता रहे एंड ये बहुत अच्छा काम करे. चलो ठीक है, देखते हैं अभी कोरिया टाउन जा पाएंगे कि नहीं. इफ़ नॉट देन आई डोंट इवन नो, मे बी शिनजुकू तक ही चले जाएंगे. थोड़ा मतलब शिनजुकू में तो मैं हुई, बट थोड़ा यहाँ पे आसपास मार्केट तक ही चल के चले जाएंगे, जस्ट टू सी इट वन लास्ट टाइम, यू नो. या When? It's raining a little bit but it's not much. बूंदाबांदी हो रही है बस. तो हम सबवे जा रहे हैं. We thought we'll get a matcha. Oh my god, not my hair. I just did my hair. It's windy though. It is windy. But it wasn't as bad as before. Guys, this is my favorite red bean matcha drink from my favorite matcha place here, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था. And this toast has red bean paste, this is butter, and this is some chocolate thing that they give, and it is so delicious. So this is going to be like my last matcha drink here. Maybe not last, second last, but yeah. And this is red bean. It has red bean in it. Yeah. So bon appetit. We are going to get some pictures. Oh, people are getting ready here. This is the place we are going to. I picked this hairband as my prop and we are all set to take pictures here. It's really pretty. We have some places to click pictures. I think यहाँ पे light flicker कर रही है. Now it's better. And they have like different rooms. Navy room, coral room, grey room and background वगैरह उसके हिसाब से. I'll show you. So pretty. I wish we weren't those so cheap, but honestly, 1,000. Oh. Does it not come back? No, it's not. But we haven't. Guys, I went to this store and look at this. Are you kidding me? They have Yontan keychain too. It's a keychain, मतलब metro card वगैरह रख सकते हो. Oh my god, this is so crazy. All of this is BTS. They have more BTS at the back too. And then they have other K-pop stuff. This entire store is just like K-pop stuff. Isn't that Chaunu? Yeah. The army bag. Guys, I'm literally fighting for my life because I have wanted this chimney for so long and I finally found it here, but मेरा luggage already over जा रहा है. But Asa is trying to convince me to get it because he's just so cute and ये मुझे इंडिया में नहीं मिलेगा. Guys, this guy right here, it's available for 1500 yen, which is like 750 rupees. There's no way I'm not taking him with me because 750 rupees में original line merch. It's too good to be true, you guys. I'm back in my hotel room and I just packed. मुझे पता मैंने कैसे ये लगेज जो बड़ा वाला है इसको बंद किया. Oh my god, even sitting on it was not helping and I'm just hoping कि सब कुछ ठीक रहे, कुछ टूटे ना. Even इस छोटे वाले बैग में कुछ जगह नहीं है. So I have to take my snacks and my chimney in this bag. I hope they let me carry this bag and कुछ वो चिक चिक ना करे. अगर वो ज़्यादा चिक चिक करेंगे I'll give both of these bags for check-in because I have 46 kgs, so I think कि मैं ये दोनों दे सकती हूँ वैसे. Here I am. I'm so tired. Packing took a lot of energy and I'm going to be carrying this bag with me which is pretty heavy क्योंकि इसमें भी काफ़ी सामान मैंने भर लिया है. And अभी इसमें कैमरा रखना है मुझे, ट्राइपॉड रखना है and चार्जर रखना है. And yeah, I am all done. थोड़ी देर में मेरी फ़्लाइट है एक्चुअली. सुबह मुझे 5:30 बजे उठना है एंड इट इज़ 11 o'clock ऑलरेडी. आई डोंट फील स्लीपी एट ऑल टुडे. एंड मैं अभी बेड पे कैमरा रख के व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज
उस साइड से तो अब रोशनी नहीं आ रही है, इट इज़ डार्क. सो इस साइड पे यहाँ पे लैंप है. So this is so much better, and I am all done packing, and yeah, tonight is my last night. Like in a few hours I have to get up, go to the airport क्योंकि मेरी flight सुबह 10:40 को है. I will reach India at 4:30. अभी ना बारिश हो रही है एंड इतनी ज़्यादा हवा चल रही है. I wish I could just go out and take a stroll नीचे, बट क्योंकि बारिश हो रही है मैं नहीं जा पा रही नीचे. वरना मैं ज़रूर जाती और मैं एक्चुअली 1-2 चक्कर काट के ही आ जाती क्योंकि यहाँ पे बहुत सेफ़ है. आप रात को 11-12 बजे घूम सकते हो, इवन तो सब बंद हो जाता है. मैं बस ऐसे वॉक करना जाना चाहती थी, बट बिकॉज इट्स सो विंडी एंड रेनिंग आई डोंट थिंक आई शुड, बिकॉज आई डोंट वांट टू फॉल सिक. And being sick on the plane is the worst feeling ever. It has happened to me before and I don't want a repeat of that. So I am just going to chill in my room. This trip has been so much more than I hoped it would be, and I feel sad right now. I can't help it. It always feels sad when a good thing comes to an end. I'm trying not to think and dwell on these feelings, and I'm just trying to soak in all of these days and just have these memories. I'm so glad that I vlogged every single day, and you know, this is my new record. I have never vlogged like this before. Like every single day I have vlogged यहाँ पे. Honestly, this is for you guys to watch, but it's also for me because down the road when I forget things, I will come back and watch this vlog, and when I want to experience these feelings again and relive these moments again, I will watch these vlogs. So yeah, that was my Japan trip, you guys. It was my first solo-ish trip. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया से किसी और कंट्री में जाऊंगी अकेले एंड मैं इतना भी मैनेज कर पाऊंगी. So I am honestly proud of myself because I managed it all and मैंने कर लिया सब कुछ and कोई इशू नहीं था. आई थिंक आई नीड टू ट्रस्ट माई सेल्फ मोर. आई ऑलवेज डाउट माई सेल्फ एंड आई थिंक कि मेरे से नहीं होगा. वॉट इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स. आई ऑलवेज focus on the what if, and yeah, what if something wrong happens, it's okay, then I will figure it out and I will figure my way out. This ट्रिप रियली गेव मी सम कॉन्फिडेंस कि मैं अकेले घूम सकती हूँ थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट. एंड मेरी फ्रेंड जब बिजी थी, मैं खुद ही यहाँ पे आसपास थोड़ा बहुत घूम रही थी. मार्केट जा रही थी, 7-Eleven, यहाँ पे फैमिली मार्ट है, वहाँ जा रही थी. सो आई थिंक आई कैन रिलाई ऑन माई सेल्फ इतना तो आराम से. एंड आई can also figure out like routes and stuff. Not the subway route here though guys. यहाँ का subway इतना complicated है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन्स नीचे भी है ऊपर भी है एंड इतने अलग अलग टाइप्स की ट्रेन्स है यहाँ पे. आई कुड अंडरस्टैंड बेसिक्स कि मुझे शिंजुकू में अगर जाना है तो मैं कैसे जा सकती हूँ, कौन सी ट्रेन पकड़ सकती हूँ, तो मेरे लिए उतना ही मैटर कर रहा था अभी. सो उतना ठीक है. एंड कल मुझे सुबह बस लेनी है, सुबह 6 बजे नहीं 6:30 बजे. सो वो मुझे अकेले करना है, बट आई नो वेयर टू गो एंड लाइक हाउ टू डू इट. सो that's good. And yeah, that is it. Japan vlogs are over. This is the last one. I hope you guys enjoyed watching this, and I hope you like all the content and everything that I post. Truly tried my best this time to vlog every single day and capture as much of Japan as I can and give you as much information as I could. By the way, I did not tell you how much my flight was. My flight was 64,000 and मैंने Japan Airlines book किया था. Vietnam Airlines वगैरह बहुत बेकार है, प्लीज़ वो सब बुक मत करना अगर आप यहाँ पे आ रहे हो. जापान एयरलाइंस की इतनी अच्छी सर्विस थी, मज़ा आ गया था मुझे बिल्कुल. एंड उनका प्लेन भी बहुत साफ़ है. The seats, they have a lot of space. So yeah, I would definitely recommend Japan Airlines. If I'm forgetting something, let me know in the comments and I will either reply there or maybe talk about it in another video. If you guys want me to do a video where I tell you how I planned this entire trip and all the cost and everything, let me know. I will happily do it because I know this will be really helpful for someone who's planning a trip to Japan. And I can also talk about the things that I really think you should do and make a comprehensive video if that is something that you want to watch. And yeah, that is it. Last night in Japan. I can't believe this trip has come to an end. This was literally one of the best moments of my life. I lived like every single day. I was looking forward to the day and it was just so good. I'm so grateful to my friend. She took out so much time and उसने मुझे इतने अच्छे से टोक्यो दिखाया. हम इतना घूमे, हमने इतना खाया. We talked a lot and we were just laughing and I had such a good time with her. And I really hope that I come here back soon. And yeah,
that's about it. Thank you so much for watching these vlogs. I hope you guys enjoyed, and don't forget to subscribe before you leave, and I'll see you guys in my next one. Bye bye.